Hello everyone. So today we are going to start, or sorry, already we have started this point, right? जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पॉइंट है हमारा, and that is what world industries. World industries. See, this point, world industry, in the last session already, like we had a discussion on what it means by industry, what it means by process of industrialization, what are the different characteristics of industrialization as well. तो ये हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था. एंड ना टू व्हाट टुडे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द वर्ल्ड. आज का जो टॉपिक है या जो अभी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें पॉसिबली आई गेस और भी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज, तो इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो पॉइंट है ये डिस्कस करने वाले हैं हम ओवर इन today's discussion. See, as we already like have discussed about what it means by industry. Industry is simply that particular interconnected production units. Hai. Those are trying to achieve one common target, or like say they are aligning over toward like one single goal itself. So that is what industry. फिर industries के type देखे थे हमने, primary industry, secondary industry, tertiary industry, quaternary industry, and quinary industry. So these industries are basically simply like say 5 different types of industries hai, 5 different types, and each of this industry is simply like representing what the resource use pattern of its own, and again say it is trying to fulfill the needs and demands of human being, okay, in one or the other way. Now, industrial regions kya honge? Industrial regions are simply those particular spatial locations of the Earth's surface where industrial characteristics are outrightly reflected. है ना? In a sense, see, छोटा नागपुर प्लेट्यू बेल्ट वाला रीजन है ना, इंडस्ट्रियल रीजन. इफ यू कंसीडर दिस पर्टिकुलर रीजन, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सो मच विजिबल. In a sense, like you will find there are steel plants, there are aluminum plants, there is like a coal mining industry, iron mining industry, and that mining related industry, that it typically reflects the societal changes that is in connection with, okay, the process of industrialization. So, and in the last lecture, as we like already had a discussion on, the process of industrialization is not only about the change in the modes of production, but it is equally about, good morning, it is equally about the social factors and social changes. So, देखो अभी हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स. जो कल हमने वर्ल्ड इंडस्ट्री स्टार्ट किया था, वैसे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देखे थे और प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल. सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद दिस टॉपिक फर्दर. इंडस्ट्रियल रीजन्स इन दी वर्ल्ड. अब इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होंगे? जैसे इसके पहले भी हमने रीजन्स को डिस्कस किया था. सो रीजन्स आर लाइक geographical region, to be more precise. See, it is like if spatial location on the earth's surface on which one or more geographical phenomena it remains constant or more or less similar. तो क्या होगा? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मॉस्को टूला इंडस्ट्रियल रीजन अगर ये है, इट मींस व्हाट कि इस पर्टिकुलर रीजन में इंडस्ट्रियल जो फिनोमेना है या इंडस्ट्रियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोज आर रिफ्लेक्टेड like so uniformly.
तो इसीलिए फिर ये बन गया इंडस्ट्रियल रीजन. सेम गोज विद द मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट, सेम गोज विद द छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, सेम गोज विद द New England industrial belt of the America or Appalachian. So whatever you consider, you'll find कि industrial region is simply that particular region on the earth surface जहाँ पे industrial activities are uniformly observed over in the space. Now कल कुछ पॉइंट लिखे थे हमने, है ना, और इसके नोट्स बना दिए, अदरवाइज पीपीटी तो अवेलेबल है ऑलरेडी. ओके, तो इस पे इंडस्ट्रियल रीजन्स की एक डेफिनेशन लिखना, जो फिर से हम वैसे इसमें डिस्कस कर ही लेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, पर 2 लाइन जस्ट उसमें ऐड करना. इंडस्ट्रियल रीजन्स, it is a spatial location on the surface. It is a spatial location on the surface where a uniform distribution of industrial characteristics is observed. For example, if we talk about Appalachian industrial region, on the eastern coast of the US or North America, industrial output, labor productivity, resource utilization, technology used, etc. as a geographical phenomena on the surface are uniformly distributed, are more or less uniformly distributed. More or less uniformly distributed. ठीक है, तो ये होते देखो इंडस्ट्रियल रीजन्स, इसको लेटर ऐड कर लेना इन द नोट्स ना. फिर अभी हम क्या करेंगे, वर्ल्ड में यूरोप के इंडस्ट्रियल रीजन्स, नॉर्थ अमेरिका के इंडस्ट्रियल रीजन, साउथ अमेरिका का एक इंडस्ट्रियल रीजन साओ पाउलो, ठीक है, और एशिया के इंडस्ट्रियल रीजन. तो 4 इंडस्ट्रियल रीजन्स हम क्या करेंगे ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन. तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यूरोप. यूरोप में द फर्स्ट इज मॉस्को टूला रीजन. So the first is this Moscow Tula region, that is again in the Russia, and this Moscow Tula region is, it usually covers the area of south of the Moscow, almost like 200 kilometers around.
देखो जनरली क्या होगा ना, एक वन थिंग अगेन कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल बेल्ट इनका ओरिजिन हुआ है और ओरिजिन है इन जनरल कि इधर यहाँ पे कोल या आयरन और माइनिंग बहुत ज्यादा है, बिकॉज दैट इज एनीवे द ड्राइवर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, और एल्स यू विल फाइंड कि इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज्यादा है कोस्ट पे अगर लाई कर रहा है। सो दिस आर मेजर रीजन। अब यहाँ पे देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इंक्लूड्स और लोकेटेड समवेयर अराउंड 200 kilometers south of the Moscow or stretched up to, and this region is having a rich deposits of iron, clay, limestone and lignite. Lignite is itself a coal. तो इस minerals के you will find enough deposits are actually lying over on this region. अब दिस रीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि जो सोवियत यूनियन जो डेवलप जो कोल्ड वॉर पे यू नो लाइक वाज अ सुपर पावर लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम, सो वन ऑफ द रीजन कि दिस मॉस्को टूला रीजन कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। सो द फर्स्ट वन। सेकेंड है देखो अगेन नाउ दिस इनफैक्ट दिस होल रीजन आर इन द करंट अफेयर, जैसे अभी मॉस्को पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, राइट। देन नेक्स्ट है डोनबास रीजन, डोनबास रीजन ऑफ यूक्रेन। अब जो डोनबास रीजन है यूक्रेन, वैसे भी करंट अफेयर में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो दिस डोनबास रीजन इज नाउ हाँ यूक्रेन और लाइक दैट इज एज वेल लाइक डोनेट्स्क बेसिन, ठीक है। अब इसका लोकेशन अगर देखोगे तो यू विल फाइंड सी दिस इज व्हाट है मॉस्को टूला वाला रीजन हो गया। ये जो रीजन आ गया दैट इज दिस डोनेट्स्क और डोनबास रीजन। Okay, so close to the Black Sea, lying on the coastal region, this Donetsk region or Donbass region is there, and it is historical. Okay, when it was part of the USSR, okay, old day USSR, the USSR, क्योंकि there was a need to have a all weather port जो कि ब्लैक सी में था, क्योंकि यूएस अगर रशिया का प्रॉब्लम देखोगे अगर तो यू विल रियलाइज कि रशिया के पास एक प्रॉब्लम है कि रशिया के पास सारे फ्रीजिंग पोर्ट्स है, जो विंटर फ्रोजन पोर्ट्स है। इसके पास ना ऑल वेदर पोर्ट नहीं है। व्हाट डज इट मीन ऑल वेदर, कि समर में भी ये रहे और विंटर में भी ये एक्टिव रहे। तो जनरली रशिया के पास आज के डेज में जो पोर्ट है दे आर ऑल फ्रोजन पोर्ट्स। इसीलिए when Russia was having say control over on this Ukraine and Tajikistan and the Turkmenistan and region, you'll find कि यहाँ पर see Russia had developed a industrial base in itself, USSR that day. So this is historical, economic and cultural region which is very famous for coal mining in the region. Coal mining is equally, it is leading to iron and steel mining. Ukraine is of temperate steppe type of climate and it is equally a producer, one of the top 5 producer of the wheat in the world. तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी देखोगे कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी कंपैरेटिवली वाइड स्प्रेड है ओवर इन दी डोनबास रीजन, दो इट इज मच फेमस फॉर द कोल माइनिंग एंड रिलेटेड थिंग्स। Next है this Kasbas region. Again, you will find that lies over in the Russia itself. And this Kasbas region, it is simply the part forming the part of the Siberian cold desert. Southwestern part में है। इसका लोकेशन देखो, this one आ गया Kuznets, south west. It should be देखो इस वाले रीजन में होगा दिस पर्टिकुलर वन, दिस कस्बास रीजन, कि जहां पे अगेन द सेम डिपॉजिट्स ऑफ यू विल फाइंड कोल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ द कोल is you will find over in the Kasbas region, though it is not very largest deposit as in इसका प्रोडक्शन सेंटर उतना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोल डेजर्ट के लिमिटेशंस होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग, but still it just because it is Siberia is considered as one of the storehouse of the mineral resource, but इसके यहाँ पर ये है कि आइस और स्नो कवर्ड है तो वहां पे मिनरल एक्सप्लोरेशन ज्यादा कर नहीं पाते। अब देखो रशिया का केस क्या है, रशिया इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर कंट्री कि जिसका एक्सटेंट है इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। रशिया कंसिडर इटसेल्फ एज यूरोपियन कंट्री, दो रशिया का मेजॉरिटी जो एरिया है इट लाइज इन एशिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे माउंटेन है यूराल,
Ural Mountain separates Russia, Eastern Russia and Western Russia. So Russia का majority area है Asia में, but it does not consider itself as a part of or Asian country, rather as a European country. And what Russia के resources भी देखोगे तो those are lying on the Asian part, Siberia. पेट्रोलियम जहां पे आज रशिया की इकोनॉमी फुल्ली डिपेंडेंट है, ये सारे पेट्रोलियम रिजर्व्स इधर यू विल फाइंड ओवर इन द साइबेरिया और अलोंग द कोस्ट ऑफ साइबेरिया. तो दैट रशिया, यहाँ पे देखो मेनली इंडस्ट्रियल रीजन्स यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन सेंटर. तो पेट्रोलियम के माइंस यू विल फाइंड लाइंग ओवर ऑन द कोस्टल रीजन ओवर हियर, देन कोल बेड माइनिंग एज वेल एंड रिलेटेड मिनरल माइनिंग, ये रशिया के वेस्टर्न पार्ट्स में ज्यादा है. इसको क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे ओवर इन द ईस्टर्न पार्ट एंड देन यहाँ पे बनेंगे इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, जो कि अभी हमने देखा डोनेस्क है, कस्बाज है और मॉस्को टूला रीजन, ये सारे यूएसएसआर के टाइम डेवलप हुए थे. नाउ नेक्स्ट चीज, वैसे इस केस में यू विल फाइंड कि सारा इंफॉर्मेशन दिया है. ओवर इन द फ्रांस, लॉरेन रीजन ऑफ द फ्रांस, सी लॉरेन दैट इज रिवर एज वेल, और ये बेसिकली और भी दो रिवर के क्लोज कनेक्शन में दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल बेल्ट, बिकॉज एज यू नो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इट रिक्वायर्स ए प्रोविजन ऑफ यूबिक्विटस मटेरियल एंड दैट इज इन ए कंपेरेटिवली बेटर अमाउंट. जैसे कि अगर जमशेदपुर देखोगे तो वहां पर भी रिवर को कंसिडर करते ही इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड. सेम गोज विद द लॉरेन रीजन ऑफ द फ्रांस. So this Lorraine region, the Lorraine River is there, and these two rivers are as well. Okay, this Moselle and Meuse, right? These two rivers are basically forming or providing the water resource and other resource base for this particular region of the Lorraine. अब Lorraine अगेन यू विल फाइंड कि वैसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फेमस है स्टीम, आयरन एंड स्टील वाला इंडस्ट्री. फिर से यहाँ पे आयरन ओर होगा, फिर से यहाँ पे कोल होगा, फिर से यहाँ पे लैमस्टोन, मैग्नीज एंड प्रोडक्शंस होगा. दिस लॉरेन रीजन इज इक्वली नाउ फेमस फॉर से सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री एज वेल, कि जहां पे अब मार्केटिंग है या सर्विस है या आईटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, यू विल फाइंड ओवर इन द लॉरेंस रीजन ऑफ द फ्रांस. नेक्स्ट रीजन है दैट इज इन द जर्मनी एंड इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस रूर सलेशिया रीजन ऑफ जर्मनी. देखो रूर is very famous for, like अभी भी आज की भी डेट में you will find Ruhr is very famous for the production of iron ore and coal mining. I told you again like कि ये जो सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं हुआ कल इंडस्ट्रियल बेल्ट बना, ये इंडस्ट्री बनी और आज उसका फुल्ली डेवलपमेंट हुआ. So all these belts were developed at least say in the 18th or 19th century, when Europe and America was, you know, at the very forefront of this industrialization. So that time this Ruhr was as such, you know, the first or pioneer in the case of development. Though Britain में भी बहुत सारी industrial belt है, but yes, over in the Germany, this Ruhr and Silesia, these two regions are so famous for. Ruhr Valley is there, that region, और ये जो region है यहाँ पे गोंडवाना rock is rather observed. गोंडवाना कोल जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, सेम कोल का डिपोजिशन रूर रीजन में भी हुआ था एंड दैट इज अगेन से वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर एंड कोल माइनिंग. देन छोटा नागपुर प्लेट्यू इन फैक्ट इज देन नोन एज रूर ऑफ इंडिया. छोटा नागपुर प्लेट्यू is known as Ruhr of India on the count that कि इसका coal deposit और iron deposit more or less same है with the Ruhr. Equally, the deposition was laid down during the period of Gondwana itself, and then it has equally led to the industrialization of the whole region. Same goes with the छोटा नागपुर region as well, जहां पर इसका potential है कि यहाँ पे इंडिया में second 5-year plan, जिसको हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, दैट सेकंड 5-year प्लान हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, जो कि फिर बाकी सारे उसके कुछ जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड है ये इसी से है. ठीक है, सो रूर, सिलेशिया एंड लॉरेन ऑफ जर्मनी, ये कुछ इसके रीजन ऑफ प्रोडक्शन सेंटर. नेक्स्ट वाला जो पार्ट हम देखेंगे दैट इज व्हाट ऑफ
नॉर्थ अमेरिका। अब देखो क्वेश्चंस ऐसे नहीं आए, इफ यू गोन थ्रू हैव गॉन थ्रू द पीवाईक्यूज, देन क्वेश्चन ये नहीं आए एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल बेल्ट इन नॉर्थ अमेरिका, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल बेल्ट इन वेस्टर्न यूरोप और दैट एशिया। क्वेश्चंस का तो नेचर कुछ और है, क्या है वो देखेंगे वैसे, कि हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनालिटिकल ओरिएंटेशन के क्वेश्चन है। तो पहले उसको समझने के लिए हमको ये बेसिक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द इंडस्ट्रियल बेल्ट्स। तो नॉर्थ अमेरिका लाइक इट इज हैविंग 3 to 4 और पॉसिबली मोर, वैसे तो बहुत ज्यादा है बट फिर भी इंपॉर्टेंट जो बेल्ट होंगे, सी दिस न्यू इंग्लैंड बेल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन विच इज वेरी फेमस फॉर द फिशिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे दो करंट्स आ रहे हैं, लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम, जहां पे इनका मिक्सिंग होगा, दैट क्रिएट्स अ बेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कॉड फिश के लिए जनरल फिशिंग ग्राउंड्स यू विल फाइंड आर प्रीटी मच अवेयर like famous for, and it is as well like a port or harbor industrial region जहां पे port और harbor exports much identify, right? और भी इसकी इंफॉर्मेशन है। सेकेंड बेल्ट इज लाइक दिस वन, मिडिल अटलांटिक बेल्ट और Appalachian mountain, Appalachian industrial region which lies on the spine of Appalachian. It means what? इस Appalachian के रीच को फॉलो कर रहा है, lying on the eastern coast of the US, where again export potential is lot, and it includes one of the world's most industrial regions, जो जैसे न्यू यॉर्क, then Washington, then Philadelphia, Boston, and again you will find Baltimore. ये कुछ सारे locations है या इसके जो industrial cities है. Now this industrial belt has led to largest conurbation in the world, जो कि हम population geography में देखेंगे. Largest conurbation, it means it is one of the largest metro city in the world, this New York Baltimore रीजन. सो यहां पर देखो सेम एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहां पे इनके पास आता है, ऑलमोस्ट लाइक 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला पॉइंट है, एंड दैट फॉलोज द स्पाइन ऑफ द Appalachian माउंटेन फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मिसिसिपी, नॉर्दर्न मिसिसिपी. The region's economy, once highly dependent on mining, forestry, agriculture, chemical, is now what? Experiencing a transition, say, towards a service-based industry. Service-based industry. This region was once like a storehouse of industrial production in the world. और इसी का ये बेनिफिट हुआ है कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ये सारे क्या है कि बहुत मेगा हब्स बन गए ऑफ द अर्बनाइजेशन नाउ. बट जैसे भी एज यू नो मच वेल कि जैसे भी किसी भी रीजन की या सिटी की एक लेवल तक ग्रोथ हो जाएगी, नाउ इट इज हैविंग ए नेचुरल टेंडेंसी टू ट्रांजिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बेस टू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. मुंबई के साथ क्या हुआ? मुंबई के साथ भी सेम हुआ कि पहले मुंबई जब डेवलप हुई थी तब मुंबई वाज ए पोर्ट सिटी एंड मुंबई वाज लाइक ए इंडस्ट्रियल सिटी. तो मुंबई पे डेवलपमेंट हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट. बट जैसे जैसे मुंबई ने फिर पेस पकड़ा, यू विल फाइंड कि इट स्टार्टेड टू अक्यूमुलेट वेल्थ और फिर अट्रैक्ट पॉपुलेशन, और अब इंडस्ट्री सारे मुंबई से अवे लोकेट हो रही है. इसीलिए फिर उसका अदर काउंटर सेंटर है पूना, अदर काउंटर सेंटर है नासिक, दैट रीजन. और मुंबई में अब क्या होगा? मुंबई में यू विल फाइंड ओनली सर्विस रिलेटेड एक्टिविटी, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है, या बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ऑल इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हब्स, ये सारे हेडक्वार्टर्स रहेंगे इन द मुंबई. सो जनरली यही होता है, से दोज रीजन्स व्हिच आर हैविंग ए ग्रेट or which are famous for much industrial output, now they are having a natural tendency to transit towards the service based economy. देन न्यू इंग्लैंड रीजन जो ऑलरेडी हमने देखा था. देखो वैसे वर्ल्ड में फेमस है दिस ग्रेट लेक रीजन. दिस देयर आर 5 लेक्स ओवर इन द नॉर्थ अमेरिका. दिस लेक सिस्टम इज नोन एज ग्रेट लेक सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स, राइट, मिशिगन, सुपेरियर, यूरॉन, ईरी, ओंटारियो. एक्चुअली ये लेक डिफाइन कर रहे हैं, लेक भी डिफाइन कर रहे हैं बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका और यूएस. तो अब ये रीजन देखो इतना रीच है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट वाटर रिसोर्सेज तो है ही यहाँ पे, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल फाइंड इस रीजन में से
कोल फिर से आयरन और माइनिंग का बहुत ज्यादा डिपोजिशन है. नाउ यू गाइस विल बी लाइक कि सर कोल और आयरन और इतनी बार आ रहा है, बट अगेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सारी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस जो स्टार्ट हुई है वो कोल और आयरन से ही तो कनेक्टेड है. स्टील नोन एज ए ड्राइवर ऑफ अगेन मॉडर्न सिविलाइजेशन, इक्वली कोल एज वेल, क्योंकि कोल से ही तो सारी ट्रांजिशन स्टार्ट हुई थी. सो दिस रीजन इज अगेन इक्वली मच रीच्ड इन टर्म्स ऑफ से कोल एंड आयरन और डिपॉजिट्स. अब यहाँ पे कुछ मेजर सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड है. जैसे ये इंडस्ट्री यू विल फाइंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब इन द वर्ल्ड. यहाँ पे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन का हब है. जैसे डेट्रॉइट, दिस डेट्रॉइट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सिटी. दो नाउ अब तो ट्रांजिशन इसका भी हो रहा है, बट डेट्रॉइट है, देन पिट्सबर्ग है, देन बफेलो है और शिकागो. This all cities are simply the production hub of the Great Lake region. These cities are having such a huge potential. Apart from automobile, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे आयरन और स्टील वाला फिर प्लांट तो एस्टेब्लिश्ड है ही है. इक्वली यहाँ पे फिर से रिलेटेड विद दी माइनिंग एंड नाउ सर्विस बेस्ड ट्रांजिशन. Service based transition is observed. This is what this Great Lake region of the US. तीन मेजर रीजन है वैसे, this Appalachian Belt, New England region and Great Lake system. Apart from this, इसके वेस्टर्न मार्जिन पे भी देखोगे कैलिफोर्निया एंड सैन फ्रांसिस्को, ये भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है. सैन फ्रांसिस्को इज फेमस फॉर सर्विस और आईटी इंडस्ट्री. आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे सिलिकॉन वैली भी लोकेटेड है. यू विल फाइंड कि जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है. तो सारे इधर लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट या तो वेस्टर्न कोस्ट, सो नियर टू दी कोस्टल रीजन. और ये हो सकता है कि वहां पे इंडस्ट्रियल और माइनिंग बेल्ट्स है. अब एक और कनाडा वाला भी रीजन ले सकते हो, मतलब न्यू इंग्लैंड रीजन इज फर्दर स्ट्रेच ओवर इन द कनाडा एज वेल. और कनाडा के वेस्टर्न कोस्ट पे अगेन देयर इज लाइक ए इंडस्ट्रियल बेल्ट जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी होगी. हाँ, वेस्ट कोस्ट रीजन ऑफ कनाडा is very famous for energy and agricultural production and import. राइट. अब क्या होता है फिर से, ये वैसे वैसे वर्ल्ड फेमस था. कनाडा इज एनीवे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स. एग्रीकल्चर मतलब सारे नहीं, बट जो वहां पे नेचुरली प्रोड्यूस हो सकते हैं. व्हीट हो गया या अगेन यू विल फाइंड से कॉटन वाला प्रोडक्शन है. तो इस वाले प्रोडक्शन का से दिस कनाडा इज एनीवे वाज लाइक अ हब. एंड विद जस्ट 10 million inhabitant, this cold desert region is leading to industrial and agricultural hub. So ये कुछ belts है of the North America. अब देखो what is the problem with the Great Lake region or kind of न्यूयॉर्क और Appalachian region. अब ये एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, जिस प्रोसेस को अभी हम डिस्कस भी करेंगे, इसका कंटेंट भी नोट डाउन करेंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कल हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज समथिंग और इट इज व्हाट द रिफ्लेक्टिंग और इंक्रीमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल बिहेवियर और इंडस्ट्रियल रीजन्स और फेनोमेना. नाउ de-industrialization क्या होगा? It is simply that process by which, or say this process from where economy or the world is transitioning from industry to some other sectors now. ऐसा भी हो सकता है कि ये बन जाएंगे घोस्ट टाउन्स, कि जहां पे ये था कि पहले कभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती थी, अब ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उतनी ज्यादा कॉमन नहीं है. राइट. एंड सेम गोज विद दी this Great Lake region, जहां पे अब transition is rather observed and now this region is transitioning towards service based case or either now getting somehow converted into the less industrial belt or service say no industrial zone itself. अब ये था US, नॉर्थ अमेरिका. देन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में वैसे और भी है, एक इसमें ऐड किया है साओ पाउलो. ठीक है. दिस इंडस्ट्रियल रीजन इज नोन एज दी, जैसे मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सेम गोज विद दिस रीजन दैट इज ए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द ब्राजील. वंस अपॉन अ टाइम और लाइक से few hundred years ago, few hundred मतलब क्या, 1 century ago, you'll find this Sao Paulo region was like a major production hub of the Brazil.
अब ब्राजील में उस टाइम में क्या प्रोडक्शन होता था, तो यू विल फाइंड इट इज जस्ट हैविंग द प्रोडक्शन, अगेन मोर और लेस द सेम थिंग है कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल का एक प्रोडक्शन हब था एंड माइनिंग, स्टील, इनका प्रोडक्शन हब था दिस साओ पाउलो रीजन, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो एनीवे दैट लाइज देयर पोर्ट ड्यू टू. सो व्हाट हैपेंड नाउ, बट क्योंकि इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन हैज नाउ सो ग्रेविटेटेड इनटू कि इसने क्या कर लिया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अट्रैक्ट कर ली, और अब इसका ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी टू सर्विस बेस्ड इकोनॉमी. देखो सिंपली यही केस होगा कि पहले एक जो रीजन होगा मैन्युफैक्चरिंग हब, और वो ट्रांजिशन करेगा टुवर्ड दी सर्विस बेस्ड हब. सो टर्शरी सेक्टर डोमिनेटिंग इंडस्ट्री हो गई है यहाँ पे, फोकसिंग ऑन सर्विसेज बिजनेसेस फॉर दी कंट्री इटसेल्फ. ब्राजीलिया तो ये पॉलिटिकल कैपिटल है, वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ दी ब्राजील. देन एशिया, ठीक है. अब एशिया में दो फेमस है रीजन है, एक जापान और चाइना, वैसे साउथ अफ्रीका में भी है. तो क्या हुआ काजल, नहीं. So Yokohama Tokyo belt, this Yokohama region is again a industrial hub of the Japan which lies in the greater Tokyo region. ये टोक्यो का ही पार्ट है, but yeah still, because as you know कि Japan is anyway a small island group, it is like a archipelago in itself, और ये चार major groups of island से बना है. So दिस फोर आइलैंड ग्रुप्स में से जो मेजर या लार्जेस्ट जो आइलैंड ग्रुप है, वहां पर यू विल फाइंड दिस योकोहामा रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल, वेयर अब फिर से यहां पे क्या होगा, देखो टोक्यो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द वर्ल्ड, नॉट वन ऑफ द, इट इज द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द वर्ल्ड, और योकोहामा इज इक्वली एक्सपोर्ट सेंटर, इट इज इक्वली लाइक एक्सपोर्ट सेंटर. यहां पे देखो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, you'll find it is a major commercial hub of the greater Tokyo area. The city has a strong economic base, especially in shipping, because Japan is anyway one of the largest shipbuilding economy. Apart from shipbuilding, biotechnology, then semiconductor industry and fishing activities are much common over in this region. This hub of shipping, semiconductor, electronics and biotechnology है ना. तो जापान इज एनीवे के उसके पास नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल तो देखो जापान के पास है नहीं. जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियाज आयरन एंड स्टील. इट इज इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल एंड रिलेटेड रिसोर्स. तो जापान के पास बेसिकली रिसोर्स या रिसोर्सेज बहुत कम है, बट जापान के पास है उसको टेक्नोलॉजी, हाउ टू कन्वर्ट दोज रिसोर्सेज इनटू सम वैल्यूएबल प्रोडक्ट. एंड दिस वे सी जापान इज नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है. तो जापान वन ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, जबकि उसके पास आयरन के कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ना कि कोल के. फिर भी Japan is third largest producer of the region. Apart from this Japan, you will find this Osaka Kyoto region. This Osaka Kyoto again, like I guess on the Kyushu island group, or Osaka Kyoto is basically the like a religious capital of Japan. जैसे इंडिया के रिलीजियस कैपिटल वी कैन कंसिडर प्रयागराज, वाराणसी रीजन. सेम गोज विद द क्योटो. तो क्योटो और वाराणसी दे आर व्हाट हैविंग ए सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, राइट. तो जैसे क्योटो को डेवलप किया, वैसे ही हमको डेवलप करना है वाराणसी को, ऐसा ये प्लान है. तो दिस क्योटो ओसाका रीजन is again having poor industry resource base, but still it is highly इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री. जापान में इलेक्ट्रॉनिक और ये सारे प्रोडक्शन सेंटर्स के हब है, और वहां से फिर एक्सपोर्ट है, फिशिंग है, ये सारी कुछ चीजें कॉमन है. ठीक है. एक और रीजन आएगा दिस सेओल रीजन ऑफ साउथ कोरिया. सो इट इज अगेन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हब. नेक्स्ट है दिस वन, दिस बीजिंग तियानजिंग रीजन. अब बीजिंग इज एनीवे द पॉलिटिकल कैपिटल है, बट फिर भी यहाँ पे इट जस्ट बिकॉज इट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर सेम देखो ये रीजन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है कोल से, क्योंकि यहाँ पे कोल रिजर्व्स है ऑफ मैरीटाइम डिपॉजिट्स एंड वेजिटेशन डिपॉजिट्स एज वेल. सो दिस रीजन
It is now first industrial base है यहाँ पे, and now because Beijing और political centers है, तो ये service based industries भी much dominant, service based industries. Apart from this, Yangtze Valley, this Shanghai और ये वाली regions है, this Manchurian region, Yangtze Valley, North China, South China, ये कुछ और इसके रीजंस है कि जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल हब्स होता है. ठीक है, तो ये बेसिक देखो, आई एम टेलिंग यू अगेन कि क्वेश्चन ये नहीं आएगा एक्सप्लेन द रीजन ऑफ योकोहामा रीजन ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल बेल्ट. आ भी सकता है, दो वी कैन नॉट डिनाई दैट पॉसिबिलिटी, बट फिर भी द मेजर पॉसिबिलिटी इज व्हाट कि इसका एनालिटिकल बेस्ड में क्वेश्चंस आएंगे. फाइन, तो पहले इसके चलो पीवाईक्यूज देखते हैं, देन विल नोट डाउन फर्दर सम फैक्ट्स अबाउट दिस. I'll find PYQs और इस कंटेंट में तो बहुत ज्यादा गैप रहेगा. Analyze the dynamics of industrial location. Analyze the dynamics of industrial location in the metropolitan cities of India. In the metropolitan cities of India. 2020. A large scale global shift in the manufacturing, a large scale global shift in the manufacturing is outcome of deindustrialization, in the developed world, matched by industrialization in the developing world. Industrialization in the developing world. Industrialization in the developing world. Analyze this statement. 2019. Discuss the degree of importance. इस क्वेश्चन को हम लेटर डिस्कस करेंगे वैसे इस वाला. Discuss the degree of importance of transportation costs as a factor of industrial location, with respect to footloose industries. Footloose industry. 2018.
2018. Answer the following. एक थोड़ा odd question है, but yes. Answer the following. Locational significance of Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam in European economy. In European economy. 2012. 2012. एक ही रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है वैसे ये. Then write short note on. Write short note on problems faced by industries. Problems faced by industries due to inertia. Due to inertia. 2012. Due to inertia. ट्वेंटी 2012 में पूछा था ये. Then ठीक है, इतने क्वेश्चंस है. अब देखो इस क्वेश्चंस में यू वोंट फाइंड कि दैट इज आस्किंग यू फॉर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स इन यूरोप, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स इन अमेरिका और एशिया और दैट वे, राइट. तो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है. क्वेश्चंस आर रादर ओरिएंटिंग टुवर्ड्स सम एनालिटिकल एस्पेक्ट के द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मैच विद द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अदर वर्ड्स. तो फिर ये जो प्रोसेस है ये हमको पहले समझनी पड़ेगी एंड देन एनालिटिकली वी नीड टू आंसर दिस केस. So, keep the heading deindustrialization. Deindustrialization. According to IMF, according to IMF, deindustrialization is a phenomena. Deindustrialization is a phenomena under which employment in manufacturing is is declining as a share of total employment, in the world's most advanced economies. In the world's most advanced economies.
Next, the trained, particularly evident in. The trained, particularly evident in the United States, US, and Europe. United States, US, and Europe. ब्रैकेट में लिखो मिडलैंड बेसिन ऑफ मैकिंडर. Midland Basin of Mackinder, bracket close. Is also apparent in, APPARENT, apparent in Japan, in Japan, and most recently in the, in Japan, and most recently in the, most recently in the four tiger economies, four tiger economies. पता है टाइगर इकोनॉमीज क्या है? फोर टाइगर इकोनॉमीज, ब्रैकेट लिखो, फोर टाइगर इकोनॉमीज. अब देखो नाम लिखो तब बताना फिर इसमें. फर्स्ट ब्रैकेट में लिखो या कैसे भी लिखो. हांगकांग, कोरिया, सिंगापुर, चाइना एंड ताइवान. पांच नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे. अब IMF कंसिडर करता है कि ताइवान इज अ प्रोविंस ऑफ चाइना. ताइवान कंसिडर इटसेल्फ एज अ सेपरेट कंट्री. तो अब इसमें इशू है. Many regard deindustrialization with alarm. Deindustrialization with alarm. And suspect it has contributed to, widening income inequality. Widening income inequality. Some suggest that reasons for this process are first, the integration of global economies due to globalization. The integration of global economies due to globalization. Second, increasing north-south trade. Third, overpopulation and resource concentration in this region or countries. Overpopulation or resource concentration in this region or countries. Fourth, growing resource scarcity
in this region or country, growing resource scarcity. As growing resource scarcity in this region or country, as they have started the industrialization well in advance. Rising rising environmental concerns, rising environmental concerns due to manufacturing, due to manufacturing, मैन्युफैक्चरिंग पोल्यूशन, जैसे उसमें लिख दो पोल्यूशन, inefficient resource use, etc. Next, rapid technological changes, rapid technological changes, rapid technological changes, changing technology जो है. Next, global governance policies, global governance policies like Kyoto Protocol, Paris Deal, जिसमें देखो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन था, है ना, या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग था, तो ये सारी कुछ चीजें आर रिलेटेड विद दिस वन. इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, कार्बन ट्रेडिंग एंड दोज वे. ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग लिख दो तो और भी समझ आ जाएगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन. हाँ ठीक है, ये पॉइंट्स हमने नंबर कर दिए. अब एक और रीजन ही लिखेंगे, बट इसको थोड़ा सा आंसर के टर्म में लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा था. मेनी क्रिटिक्स argued that many critics argued that the process of deindustrialization the process of deindustrialization is the result of rapid industrialization in the developing countries, is the result of rapid industrialization in the developing countries like China, India, Brazil, etc. Brazil, etc. Due to first, labor intensive manufacturing industries prefers a cheap labor location, cheap labor cost location. Labor intensive manufacturing industries preferred a cheap labor cost location. Bracket. Weber. 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 Bracket close. Second, strong resource base in this economies. Strong resource base in this economies like African, like African,
attracts the industry, attracts the industry or investor. Third, third, deindustrialization of, sorry, decentralization, not deindustrialization, decentralization of the industries favors establishment of plants or factories near to the marketplace itself, near to the marketplace itself. ब्रैकेट लिख सकते हो, वीबर एनालिसिस, वीबर, फिर से एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो, एग्जाम्पल किया मोटर्स, KIA मोटर्स, प्रोडक्शन इन इंडिया, कि जहां पे मार्केट है वहीं पे प्रोडक्ट कर लो. नेक्स्ट, नेक्स्ट, concessional policies of the native government, concessional policies of the native government in land tax, in land comma tax and एक्सेट्रा. ठीक है, इतना ही लिख दो, लैंड टैक्स एक्सेट्रा. लास्ट, ग्लोबल ग्लोबल पॉलिसी पुश, global policy push towards the towards the industrialization of the developing economy. To validate this fact, last point looking up, to validate this fact, we can take example of China and India. China and India. Where the process of industrialization started in 80s. The process of industrialization started in 80s. Matching with the growing deindustrialization in the developed economies.
एक लास्ट पॉइंट अब लिखेंगे इसमें, इंडस्ट्रियल इनर्शिया। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो पॉइंट इफ यू फाइंड के फिर यूएस में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ वो बताओ, यूरोप में, ब्रिटेन में, और फिर उसको चाइना, इंडिया, ब्राजील से मैच कर दो, तो आपके पास वैलिडेशन हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इनर्शिया describes a stage at which industrial inertia describes a stage at which an industry prefers to run an industry prefers to run in its former location. Industry prefers to run in its former location. Aldo, Aldo. The attractive factors, main attractive factors, ब्रैकेट में, responsible for setting the industry, bracket close, responsible for setting the industry are gone, are gone. For example, ending reserves of, for example, depleting reserves of, ज्यादा बेटर रहेगा, depleting reserves of coal, water crisis, energy crisis, water crisis, energy crisis, or changed incentivization measures, changed incentivization measures. An industry may still like to stay in its former location. An industry may still like to stay in its former location because because that saves its fixed cost, that saves its fixed cost. Bracket land capital, land capital. Second, efficient transportation cost. Second, efficient transportation cost. Third, may have availability of the may have availability of the skilled labor force, skilled labor force. Next, interconnected activities in the region, interconnected activities in the region. Limits means activities of the region करो, फिर लिखो limits
limits any possible change, any possible change in the location of the industry, in the location of the industry. तो देखो ये क्या था, इंडस्ट्रियल इनर्शिया मतलब क्या होता है, जैसे ये होता है ना, आपने आई गेस कभी एक्सपीरियंस किया होगा। इंडस्ट्रियल इनर्शिया मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, जब आए होंगे तब कोई एक रूम लिया होगा, है ना, कोई एक पीजी ऑप्ट किया होगा या हॉस्टल ऑप्ट किया होगा। तो पहले लगा था कि यार चलो ठीक है, ले लेंगे और इसको फिर ना कुछ टाइम के बाद चेंज कर देंगे, है ना, जो मेरे साथ हुआ। फॉर एग्जांपल जब मैं आया था तो मैंने यहाँ सोचा था कि ठीक है, अभी जब मैं जहां पर हूँ अभी मैं क्या करूँ, कुछ दिन के लिए मैनेज करते हैं एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल रिलोकेट माई सेल्फ। अब जैसे जैसे टाइम चलने लग गया, ठीक है, अब क्या हो गया ना, नाउ मैंने टारगेट रखा था कि 6 मंथ में मैं चेंज कर दूंगा, बट व्हाट आई हैव रियलाइज लेटर कि अब एक इनर्शिया डेवलप्ड हो गया। व्हाट काइंड ऑफ इनर्शिया इट इज, कि यार अब ठीक है ना, मतलब अब सारी चीजें तो सेट हो गई, लोकेशन पास में है, कुक अवेलेबल है ना, और बेसिकली क्या है कि बाकी फ्रेंड्स है या कुछ और चीज है, एंड ड्यू टू विच नाउ आई एम मच रिलक्टेंट टू रिलोकेट माई सेल्फ टू सम न्यू डेस्टिनेशन। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एक काइंड ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया व्हाट, ये कंसेप्ट है न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। It is a tendency of a body to remain in its original state of motion unless and until some external imbalance force is applied. तो जब तक कि आप पे कोई एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स नहीं आएगा, यू विल रादर टेंड टू रिमेन इन योर ओरिजिनल पोजीशन, या जो पोजीशन आपने सेट किया, इसको बोलेंगे इनर्शिया। सेम गोज विद द इंडस्ट्री एज वेल। अब क्या होता है, बहुत बार ऐसे होगा कि एक इंडस्ट्री थी, आपने मान लो वहां पे गवर्नमेंट की कुछ कंसेशनल पॉलिसीज थी इसलिए एस्टैब्लिश की थी, नॉर्थ ईस्ट में मान लो। अब गवर्नमेंट ने बोला था कि 10 years वी विल गिव यू कंसेशन। बेस्ड ऑन दैट, इट जस्ट कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि यार कंसेशन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, टैक्स एग्जेम्पशन मिलेंगे, सो व्हाट वी विल इन्वेस्ट ओवर इन द रीजन, वी कैन इन्वेस्ट इन द रीजन। अब क्या हो गया, 10 years के बाद ये सारे कंसेशन अवेलेबल नहीं है, and then even now it just because you have invested a lot, you have now find maybe some potential linkages as well, some market identity as well, so अब you are not interested to relocate yourself after some time. सेम गोज विथ, यू विल फाइंड के रिलेशनशिप इनर्शिया भी ऐसे ही होता है कि कुछ एक टाइम अगर रख दिया तो फिर क्या होगा, फिर वो वही चीज को हम मैनेज करने लगते हैं। सो दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ इनर्शिया इटसेल्फ। आई होप ये कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ इट मैचेस विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड इंडस्ट्रियल इनर्शिया। So this is about industry. Now, बस 10 मिनट्स ही बचा है, 5 मिनट्स बचे हैं। हम्म, क्या होता है, ये सर्कुलेशन होता है। इसको हमने डिस्कस ओशनोग्राफी में किया था, नहीं किया? श्योर? हाँ, तब ओशनोग्राफी में आप थे? ओशनोग्राफी में थे?
इसको तो डिस्कस तो कर ही लिया था हमने। इसको एक होता है थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, है ना। तो थर्मोहेलिन सर्कुलेशन या जिसको बोलते हैं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। हाँ तो ऐसा ये चीज है ना, मुझे पता है कि ये किया है। हाँ तो हाँ इसी का ये पार्ट होता है कि जिसमें हमने देखा था, याद है हमने करंट के दो टाइप्स देखे थे बेस्ड ऑन डेप्थ, एक सरफेस करंट, एक डेप्थ करंट। तो जो सरफेस करंट और डेप्थ करंट का ये जो मूवमेंट है ना, मैं फिर भी एक बार बता रहा हूं, तो दैट इट लीड्स टू दिस एएमओसी, एटलांटिक मेरिडियोनल ओशियानिक सर्कुलेशन। तो ये कहां पे वार्म वाटर होगा तो ये अप आएगा, और कोल्ड वाटर होगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा बिलो द सरफेस, डीप वाटर जो करंट था। तो ये है देखो एएमओसी। इस पे वैसे मैंने आपको वेबसाइट तो बताई थी ना, geo4geography.com बताई थी ना, तो उस पे मैंने इस पे आर्टिकल लिखा है, दिस ओएमएस ओसी वाला। तो एक बार उसको वेरीफाई करना करंट अफेयर्स के आर्टिकल में, और आई विल शेयर ऑन इट ऑन द ग्रुप एज वेल कि एएमओसी क्या है। इसको तो डिस्कस कर ही लिया था खैर। अच्छा देखो ये वाला होता है, ये दिस ओएमएसी, दिस वन, ग्लोबल कन्वेयर अरेंजमेंट और द ग्लोबल ग्रेट ओशन करंट। तो ये क्या होता है, ओशन करंट्स आल्सो फ्लो thousands of meter below the surface. These deep ocean currents are driven by differences in the water density which is controlled by temperature and salinity. इसीलिए इसको बोलेंगे थर्मोहेलिन सर्कुलेशन। हाँ यही तो है ना अभी, मतलब ये क्या, देखो पढ़ लो एक बार इसको तो और ज्यादा बेटर समझ आएगा। शायद मैं ऐसे ही रीड कर लूंगा देन। सरफेस और डीप करंट इनका ये कॉम्बिनेशन है दैट इट लीड्स टू दिस कन्वेयर बेल्ट अरेंजमेंट। मतलब अब ये जो टॉपिक हुआ था यही याद नहीं है तो फिर इसमें अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी, आई डोंट नो। देखो और अब ये एएमओसी चेंज हो रहा है एंड दैट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम ओवरऑल इन द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम। कुछ समझ आ रहा है? यस नो। देखो ये वाला होता है दिस वन एएमओसी, कि ये जो रेड कलर दिख रहा है ये वार्म वाटर है, ये सरफेस पे फ्लो कर रहा है, और जैसे ही इट एंटर्स इनटू द पोलर रीजन इसकी टेम्परेचर कम हो जाएगा, इट विल डीप डाइव इनटू ओशनिक सरफेस, ये बन गया कोल्ड वाटर। फिर ये कोल्ड वाटर जब भी फिर से अप करेगा तो ये वार्म वाटर फिर से ये कंटिन्यूस फ्लो, एंड दिस इज हाउ दिस सरफेस रेगुलेट और दिस फ्लो रेगुलेट। इसी को बोलेंगे हम एएमओसी। तो ये जो मैप है ये है डीप और सरफेस करंट का, और हमने जो मैप याद रखा है सी दिस वन, ये है सरफेस करंट का, वार्म और कोल्ड, है ना। ये वार्म ये वाला है, कोल्ड ये वाला है, बट ये सारे सरफेस करंट्स है जो सरफेस पे ही मूव कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू दिस डीप ओशन करंट, ये वाला स्ट्रक्चर देखो दिस वन, वार्म और डीप, वार्म सरफेस ये और डीप ये करंट, राइट। तो इस वजह से फिर क्या होगा, यू विल फाइंड दिस एएमओसी इज व्हाट गेटिंग क्रिएटेड, कि एक ये जो गल्फ स्ट्रीम यहां से जा रही थी, ये यहां पे क्या करेगी, वार्म वाटर कोल्ड वाटर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंगली, ठीक है, यहां से वार्म वाटर आएगा, इसका एक ब्रांच नीचे आएगा, एक ब्रांच कैनरी करंट के टर्म में मूविंग फर्दर लाइक से टुवर्ड्स द ईस्ट, एंड दिस इज हाउ दिस फिनोमेना ऑपरेट्स। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ इसलिए पूछा था काजल ने कि ये जो 5 मिनट है वो कंज्यूम हो जाए। तो अब आंसर हो सकते हैं वो क्वेश्चन, हो जाएंगे श्योर। चलो गुड, मतलब ऑप्शनल क्लास ज्वाइन करने का कुछ बेनिफिट तो हुआ। हाँ?
ओके सो यस दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल हम जो स्टार्ट करेंगे पॉइंट रहेगा वर्ल्ड एग्रीकल्चर। इसमें हम वन ऑफ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है विटलसीज एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, जो हम कल डिस्कस करेंगे देन। और फिर क्या बचा है, फिर फूड सिक्योरिटी बचा है इन दी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ट्रेड और फूड सिक्योरिटी देख लेंगे तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी वर्ल्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके गेटिंग? यस चलो तो थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। कोई टास्क नहीं है, कोई टेस्ट है? हाँ? चलो ठीक। एंड